फैंटास्टिक्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत 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 अच्छी हूँ गाइस। एंड एज यू गाइस कैन सी बाय द टाइटल ऑफ टुडेज वीडियो, आज का वीडियो है सीरियल मिल्क स्लाइम. लाइक इट इज़ कॉल्ड एज लाइक बनाना सीरियल मिल्क स्लाइम, बट बिकॉज it is yellow, but you know it is the cereal milk kind of texture. It is a super thick and super glossy slime. So yeah, like this is the most thickest slime I have ever made in my life. You guys will see after some time, like in the video you will see how thick it is. And make sure you guys subscribe. We are so slow these days. Please make sure you guys are subscribed and hit that like button as well. It will help me to grow even more. So yeah guys, that's all. And if you guys want me to check out some instant snow, that is linked in the description below. If you guys want me to check out this snow, then make sure you guys give this video 800 likes, and if 800 likes are completed, then we are going to try this instant snow, and I'm going to make so many different types of slime with it. And yeah, you guys just wait. And now without talking any much, let's get started with today's video. So fantastic. For making any slime, we need our slime bowl. So here is our slime bowl, and this is the Fevicol that we are going to use today, and this is like the 200 gram one. And हम लोग इसमें सिर्फ फेविकॉल यूज़ करेंगे गाइस. हम लोग इसमें थोड़ा सा भी वाटर ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमें सुपर थिक और सुपर ग्लॉसी स्लाइम चाहिए. तो हम लोग अपना सिर्फ इसमें फेविकॉल ऐड करेंगे, एंड 200 ग्राम्स ऑफ फेविकॉल. आपको जितनी भी क्वांटिटी बनानी है आप उतनी क्वांटिटी बना सकते हैं, बट ध्यान रखें आप उसको वाटर उसमें ऐड मत कीजिए. एंड द नेक्स्ट थिंग इज़, जो इसमें वाटर ऐड होगा वो पूरा एक्टिवेटर का वाटर ऐड होगा, तो हमारी स्लाइम ओवर थिक नहीं बनेगी. यू नो, जैसे रबरी स्लाइम बन जाती है, तो वैसी स्लाइम हम लोग को नहीं बनेगी, और या हमारी स्लाइम काफ़ी थिक और ग्लॉसी बनेगी. एंड द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज़, जो कि है baby oil. Surprise, it is baby oil. So yeah guys, I am using baby oil. ध्यान रखें आपको इसमें सिर्फ baby oil यूज़ करना है. अगर आप इसमें कोई और ऑयल ऐड करेंगे, like literally coconut oil or anything like that, then it will be like super bad. आपकी स्लाइम बहुत बुरी तरह deactivate. सो फैंटास्टिक. उसके बाद हमें लोशन ऐड करना है, और ज़्यादा लोशन नहीं ऐड करना है. आप कोई भी लोशन ऐड कर सकते हैं. इससे हमारी स्लाइम बहुत स्मूथ बनेगी और थिक भी बनेगी. सो 2 पम्प्स आर लिटरली इनफ. आपको लाइक ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप फिर भी ऐड कर सकते हैं. एंड द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज़ जिलेट शेविंग क्रीम. आप कोई भी शेविंग क्रीम या फिर कोई भी शेविंग फोम ऐड कर सकते हैं. बस आपको ध्यान रखना है कि बहुत थोड़ा सा उसमें आपको वो ऐड करना है. लाइक आपको पता है, लाइक थोड़ा फ्लफ़ी, क्योंकि हमें इसको नहीं बनाना है. लाइक लिटरली सुपर लिटिल अमाउंट ऑफ शेविंग फोम, लाइक लिटरली जस्ट दिस मच, एंड या दैट्स इनफ. So fantastic. Now we are going to mix all the ingredients. First ingredients, you know, the first batch of ingredients, we are going to mix all of it, and I will let you know soon कि जो second batch of ingredients है वो क्या है. But first we are going to mix it thoroughly. Like आपका oil, lotion and everything, glue एकदम एक पेस्ट के टाइप में आ जाना चाहिए. आई विल फास्ट फॉरवर्ड, और मैं आपको अभी उसका कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ, जो फाइनल कंसिस्टेंसी है. अभी आप देख सकते हैं कि ये स्लाइम मिक्सचर कितना ज़्यादा ग्लॉसी दिख रहा है. यू गाइस, it's literally amazing, and the final result would be like literally superb. So yeah, just keep on watching. So fantastic. अब हमारे second batch के ingredients की बारी है, and the first ingredient is the color, and this is yellow color. You know, this is lemon yellow color, which is going to be used in, like, you know, banana slime. So yeah, that's it. So now we are finally going to add our last ingredient, which is our food coloring. So yeah, let's add our food coloring. It will be like super bright yellow. So yeah, our slime will be like super glossy and super nice yellow shade. So yeah, let's mix all of it, and I am going to fast forward this as well.
So fantastic, it's finally time to add our slime activator. So yeah, let's just add our slime activator. So yeah, let me show you guys my slime activator before. और activator की रेसिपी आपको आई बटन में मिल जाएगी. So this is like 1 teaspoon of borax activator. So 1 teaspoon of borax in 1 cup of water is the ratio. और अब हम लोग इसमें जो हमारा मिक्सचर है उसमें थोड़ा थोड़ा करके स्लाइम एक्टिवेटर ऐड करेंगे. हमारी स्लाइम थिक स्लाइम है तो हम उसमें ज़्यादा वाटर ऐड होने नहीं दे सकते. सो बहुत थोड़े अमाउंट में हम लोग अपना एक्टिवेटर ऐड करेंगे एंड देन वी विल मिक्स इट वेरी थरोली. एंड लेट मी टेल यू गाइस, इसको एक्टिवेट करने में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगा. यू गाइस डोंट नीड टू रश दिस प्रोसेस, क्योंकि अगर आप इसमें रश करेंगे देन आपकी स्लाइम बहुत ख़राब हो सकती है. आपको धीरे धीरे स्लाइम को मिक्स करना है. मेरा हाथ लिटरली रेड हो चुका था रात तक. जब तक मैंने इसको बनाया मेरा हाथ पूरा बहुत बुरी तरह दुख रहा था, बट द एंड रिजल्ट इज़ लिटरली अमेजिंग और इट वॉज वर्थ इट. सो या, लेट मी शो यू गाइज द प्रोसेस. और अब मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगी. एंड में आपको पूरा एक्टिवेटेड स्लाइम दिखेगा. सो या, लेट्स सी. सो द स्लाइम इज़ फाइनली कमिंग टुगेदर यू गाइस. मेरी हाथ की हालत ख़राब हो गई. यू गाइस कैन सी हाउ रेड इट इज़ फ्रॉम द मिक्सिंग. बट या, आवर स्लाइम इज़ फाइनली कमिंग टुगेदर. और आप जैसे देख सकते हैं इसमें बहुत सारे क्रम्स हैं, तो हमें ऑब्वियसली अब इसको हाथ से नील करना पड़ेगा. ओ माई गॉड, प्लस माई हैंड, क्योंकि मेरा हाथ बहुत बुरी तरह दुख रहा था उस दिन. यू गाइस डोंट इवन नो. बट या, स्लाइमर्स जो होते हैं वो एक ग्राइंडर टाइप के जो मिक्सचर होता है, स्लाइम मिक्सचर, उससे मिक्स करते हैं अपनी स्लाइम. और यू नो, माई हैंड इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ अ मशीन. सो मेरा हाथ बहुत बुरी तरह दुख रहा था. सो फैंटास्टिक. नाउ आई एम गोइंग टू नीड the slime with my hands. Oh my god, like literally it was so amazing and satisfying, but also मेरा हाथ भी बहुत दुख रहा था. and guys don't mind my voice today, मेरे को बस थोड़ा सा cold है. and yeah, so that's it and enjoy the ASMR. और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी 2-3 दिन के बाद रखने के बाद मेरी स्लाइम कैसे ग्लॉस अप हुआ. so yeah, let's see and enjoy the ASMR. So fantastic. After kneeling for like literally 15 minutes, मेरी slime already कितनी glossed up दिख रही है और इतनी अच्छी slime है. Oh my god, I cannot even stop playing with it. And yeah guys, you guys can see how smooth it looks, and after 2 days it is going to be looking like a literal miracle. You guys can see how glossy and thick it is. Oh my god, look how smooth it is. Oh my god. So yeah, let me just show you guys the slime that has been glossed up after 2 days. And yeah, enjoy. So fantastic. This is already how glossy the slime is जब मैं इसको रख रही थी gloss up होने के लिए. And let me show you guys after putting on the lid. And so this is the slime after like 2 days. जब मैंने इसको 2 days के लिए रखा था. And you guys wait for a second and yeah, let me show you guys. So yeah, as you guys can see, this is how glossy the slime is. Oh my god, the camera even can't even like literally catch the glossiness. It is like super glossy. Oh my god. Now you guys just enjoy the ASMR. और अगर आपको इसको पूरा ASMR चाहिए then go to my second channel which is Fantastic Diaries, और वहाँ पे पूरा ASMR I think Monday को upload हो जाएगा. So yeah guys, just enjoy the ASMR and yeah. So fantastic. Thank you so much. अगर आपने यहाँ तक की वीडियो देखा है तो please like this video as well. And yeah guys, that's all. Thank you so much for watching, and I'll see you guys in the next video. Bye bye.